सर स्क्रीन शेयर कर सकते क्या? ये ब्लर दिख रहा है। Hello. Now I think it is visible. We'll take यस सर। the second problem. The second problem again we have to like determine the forces in a cable. So here if you see a bit tricky problem has been given. So this is a rigid member you have. For this rigid member, it is been like fixed at one end we have, and a cable is been attached at one junction. Here we have one cable, and here we have one more cable. So we have two cables. So two cables were there, which were hung to the rigid member, rigid beam you can call. This is rigid beam. This is my rigid beam. This is my A cable. This is my B cable. So this is exactly at the center. If you see, we have a force of P, and the length from the center is exactly L by 2 and L by 2. This length is L dash. This length is L dash, and the distance from here B to the center of this one is A, and from here till center it is my B. There are again two like lengths you can see. So this is my cable A, this is my cable B. In this cable A and B, you have to find out what is the force when we apply a force P. I'm not telling like the force was not given, but you can take the force as P. Here the force as P was given. Now in this force P, if you apply a force P, then what is the force in this cable and what is the force in this B cable, you have to tell. So can you solve this? Try to solve, or else I'll do it, no problem. Try to solve it. So here even if you see, as this is a rigid beam, yes or no, as this is a rigid beam we have, so if you draw with your free body diagram, इसमें देखिए आप, when you try to pull this rigid beam, what these cables will do? Yes, what these cables will do? These cables will try to pull it up. Yes or no? ये इसको टूटने नहीं देंगे ना. ये केबल्स इसको अगर फिक्स है रिजिड बीम को, when you apply force P, fine, when you apply force P, I think this cable A and B, it will resist. And similarly you can see a reaction here. Fine, how many reactions will form here? One or two reactions will form. One is here horizontal, second one is here vertical. दो reactions यहाँ पे form. क्यों? मतलब आप देखिए यहाँ पे अगर आप pull कर रहे हो, fine, when you are trying to pull it, one like vertical reaction is absolutely it is there, fine, but when you are trying to pull it, यहाँ पे क्या होता है, even like a horizontal force will be there. So if you draw a free body diagram, of this one, so what are the complete forces we'll be getting? So already you know a P force is been there, fine. If you have P force, here we'll be having my TA, here we'll be having my TB force, fine. And the reactions if you see, so here at point like at my fixed support, we'll be having my VA, and at the same support we will be having our HA. So if you count here, how many number of forces are available, like, and how many like reactions are there, and how many number of equilibrium forces we have, and how can I solve it? So I'll just show you. So here if you see, this force we have to calculate 1, this is my second force we have to calculate 2, this is my third force we have to calculate 3, and this is my fourth force which we have to calculate 4. But equilibrium equations कितने हैं हमारे पास? Summation of f of x is equal to 0, summation of f of y is equal to 0, summation of moment is equal to 0. So we have only 3 forces, but the number of equations are 4. So I can't solve this. Practically अगर आप देखो तो मैं ये solve नहीं कर सकता हूँ. तो इसीलिए I should get one more compatible equation. One more compatible equation. I have to get one more compatible equation. If I get one more compatible equation, अगर एक भी इसमें से कम हो गया, suppose example मुझे अगर TA पता चल गया ना, तो remaining 3 I can find out. I have sigma x, sigma y, and sigma z. Or if I get VA, or if I get second one like HA, or if I get TB, anything, no problem. We can find anything.
कुछ भी अगर आपको मिल जाएगा ना, तो वहां से मुझे बर्डन कम हो जाएगा, मतलब एक एक आपको अननोन पता हो जाएगा, और रिमेनिंग जो थे अननोन, तो वो मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज कर सकता हूँ एंड आई कैन फाइंड द आंसर। दैट वाज क्वाइट हैप्पी। सो हाउ कैन आई फाइंड इट आउट? तो यहाँ पे देखिए आप, दिस इज माई नंबर एंड व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स P4, तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा ना, ये पहले ऐसा था तो ये ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, तो विच वॉज थीटा, विच वॉज थीटा, यस दैट इज ट्रू, फाइन। तो ये फोर्स का यहाँ पे ये इतना डिफ्लेक्शन रहेगा, डेल्टा एट ईयर ए, तो इसका यहाँ पे आपको डेल्टा एट ईयर, डेल्टा एट ईयर बी। देखिए अच्छी तरीके से प्लीज। सो फ्रॉम हियर दिस डिस्टेंस वाज हियर बी, दिस डिस्टेंस वाज हियर ए, आई गेस यहाँ पे रिवर्स दिया गया मैंने, सॉरी, ये बी और ये ए, मैंने यहाँ रिवर्स लिखा है, ये बी और ये ए। तो सिमिलरली इफ यू सी हियर, सो दिस इज माय बी, दिस इज माय ए, तो बी और बी से हमने कनेक्ट किया, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा बी बी, ए से ए, फाइन। सो यहाँ पे जो डेल्टा वैल्यू था, दैट डेल्टा वैल्यू इज फ्रॉम द स्ट्रिंग बी, दिस डेल्टा ए इज फ्रॉम योर केबल ए, yes or no? This delta A is from your cable A, this delta B is from your cable B. But if you see, is it into a right angle triangle? Yes or no? Is it into a right angle triangle? Yes, it is into a right angle triangle. Then can I write delta B by small, delta B by small b, which is equal to delta A by small a is equal to, can I write it as tan theta? Can I write it as tan theta? Yes, I can सर write. Yes, I can write. Why? Because it forms into a right angle triangle. Hello? सर ब्लर हो रहा है सर। अभी ब्लर हो रहा है, एक बार देखिए। हाँ सर। यस सर, ब्लर है सर। दिख रहा है अभी? नो सर सर। ब्लर हो रहा है। Now I think it will be clear, a bit clear. Yes, it is clear now. यस सर। Okay. So from here if you see, this is, ये देखो, ये एक स्मॉल ऐसा आपको एक ट्राइंगल था, एक आपको बड़ा ट्राइंगल था, हाँ. So this were two triangles. This length was A, this length was B. This was delta A, this was delta B. From similar triangles, I think from strength of materials only you have learned from similar triangle. So I can write delta B by B is equal to delta A by A is equal to tan theta. So from here, can I equate delta B by B is equal to delta A by A? Yes, I can equate. As it is similar triangle, I can equate. Then what is delta B? Delta क्या है बेटा? Delta can I write as P L by A E? Yes or no? Delta is deformation. Deformation is PL by AE. Yes, from axial loading if I apply, then I know the delta is equal to PL by AE. So can I write this as PL by AE? But what is P here? What is P here? Here P is TA. So अगर A ले रहे हो तो आप, B ले रहे हो तो TB, आपकी मर्जी, हाँ. तो TA by AE into length. लेंथ, केबल का लेंथ क्या है? What is the length of the cable? Length of the cable is L1, L dash, which is equal to, can I write as TB into L dash by AE? Yes or no? By this has A, this has B. So L dash, AE will get cancelled. Yes or no? What are we remaining with now? TA by A, which is equal to TB by B. So from here you can equate TA in terms of TB और you can equate TB in terms of TA. आपकी मर्जी, आपको जो लेना है आप ले सकते हो. TB आप TA के टर्म्स में लिख सकते हो, या नहीं तो आप TA TB के टर्म्स में लिख सकते हो, मर्जी में, आपकी मर्जी. So let us consider here, we'll take TB, which is equal to TA into B by A. Is it visible? Is it visible? Yes, sir. Okay. Now TB I have written in terms of my TA. That is okay. Now what we will do is, मैंने आपको क्या बताया था, एक मुझे अगर कंपैटिबल इक्वेशन मिल गया तो आई एम क्वाइट हैप्पी. व्हाई? बिकॉज आई हैव 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, आई हैव 3 नाउ. एक मैंने फाइंड आउट कर दिया ना,
टीबी इन टर्म्स ऑफ टीए, अगर ये दोनों में से मुझे अगर एक भी पता हो गया ना तो दूसरा ऑटोमेटिक पता हो जाएगा, यस और नो। तो मेरा एक इक्वेशन कम हो गया है, नाउ वन इक्वेशन इट हैज बीन reduced, so one equation I have reduced. So from here what we will do is we will be going with our moment, we will be going with our moment कहां पे लेंगे हम, we will take our moment summation of your moment at your hinge should be equal to 0 at your hinge। ये जो डायग्राम अगर आपको दिख रहा है ना, तो at this hinge we will be taking with our moment। now if you take moment at your point or hinge a b c, आप जो भी लगाना चाह रहे हो आप यहाँ पे लगा सकते हो, and you can see at your hinge, now at hinge how many forces are there practically, how many forces, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो hinge कन कितने रहेंगे बेटा, hinge के पास va और vb का आएगा क्या, सॉरी va और ha का आएगा क्या, यस 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 प्लीज, va एंड ha का आएगा क्या मोमेंट, No. no we will not get, we have only three forces, what are those three forces, we have ta, we have p, we have tb, हमारे पास तीन ही फोर्सेस अवेलेबल है। सो ta देखो आप, ta is it going into clockwise or anti-clockwise, is it going into clockwise or anti-clockwise, it is going into clockwise, yes or no, ta, so plus ta into what is the length we have, I think length was a, similarly plus we have tb into length was again b, now we have one more force p, now this force if you see with here one more force, this force p is acting clockwise or anti-clockwise, it is acting in our anti-clockwise, so can I write as minus p into what was the length, now here length was l by 2, see here p l by 2, length was l by 2 which is equal to 0, which is equal to 0, now we have plus ta into a plus what is tb, tb can I write in terms of ta which is equal to ta into b by a minus pl by 2 should be equal to 0, yes or no, so from here if you want to calculate I can calculate my ta value, yes or no, मैं यहां से अगर आप ta का करना है तो we can calculate ta, तो इसका LCM लीजिए आप, you just take an LCM of this one, so what we'll get ta into a square, यहाँ पे a square आ जाएगा ना आपको, so ta into यहाँ पे अगर आप देखोगे तो you will be getting it as your L square plus ta into we have b by a minus pl by 2 which is equal to 0, which is equal to 0, so from here even if you see, सर वहाँ Hello? पे 20 स्क्वायर आएगा ना सर, वो 20 स्क्वायर होना चाहिए। yes 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 ये b square, तो from here if you see we have ta into a square plus b square by a minus pl by 2 is equal to 0, so from here even if you send here pl by 2 there, so ta का आंसर क्या आएगा हमारे को, if you just send it here pl by 2 there, so what we'll get p into a into l by 2 times of here a square plus b square, बट क्वेश्चन देखो कितना डिफिकल्ट दिख रहा था ना, क्वेश्चन देखते मैं भी परेशान हो जाता था कभी कभी, लाइक 5-6 years back if you see, fine question like looks very difficult, अरे यार कितना like tough question है, like cables है, we have rigid beams, we have everything and he's asking us to find out the force, तो बहुत से बच्चे गलत करते हैं यहाँ पे, बट आंसर या सॉल्यूशन देखो इसका कितना आसान है, it is not at all difficult, so once if you have got with here ta, now can anyone tell me what is the answer for here tb, can I write as p into a के प्लेस में क्या आएगा, अभी b आएगा ना सिर्फ, into l by 2 times of a square plus b square, simple, he might ask you to find out here like ta and tb, वही पूछा है ना आपको क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो in the question he has asked you to find out what is the force in the cable, in both the cables, he has not asked a or b, he has asked you to find out the forces in the cable, then ta value is this, tb value is this, is it okay with all, yes, Yes, sir. now if it is okay then shall we go with our next problem, you have to do it now, next problem also we have some kind of springs, हेलो सर। yes tell me, सर अगर उन्होंने पूछा कि टेंशन है या कॉम्प्रेशन है उस मेंबर में तो, हाँ तो देखो ना ये आपको दिख रहा है ना, ये आपको डायग्राम मैंने बताया था, कहाँ गया ये आप देखो अभी ये जो डायग्राम मैंने डाला है
तो वेदर इट इज लाइक इन द टेंशन मेंबर, अगर यही अगर आपको है ये समवेयर, सो ये यहां से ऐसा आएगा ना, तो अभी बताइए आप, ये यहाँ पे था ऐसा, ये केबल अगर आपका एक्चुअल केबल अगर देखोगे ये फिक्स था केबल, तो वेदर इट इज अ कंप्रेसिव और टेंजाइल, कंप्रेशन। फिर ये मैंने केबल पूरा नहीं डाला था ना आपका, आई हैव जस्ट ड्रॉन अ लोअर पार्ट, उसको नीचे से अगर आप ये पी फोर्स लगाते हो तो ये कैसा ऊपर पुल करेगा, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्शन लगाया। तो दिस इज अ कंप्रेसिव फोर्स इन द केबल, इट्स अ कंप्रेसिव फोर्स इन द केबल, so like that you can just find it out. Fine, so let us go with our next problem. Now if you see with our next problem, so in the next problem we have few of the springs and that problem also, why? Because एग्जाम में कौन कहां से कैसा पूछेगा पता नहीं, तो for the beam spring system shown in figure below, determine the ratio of the forces on the spring FA is to FB is to FC. You have to find out what are the forces in that spring. Each one you have to find out. FA is to FB is to FC. So I'll just draw the diagram again. If this is my member, same again somewhere it is fixed here. Again this is a rigid beam only. Again this is a rigid beam only. Here we have 3 springs now. 1, 2, 3. Fixed here, and fixed here. So this is A spring, let us take this is B and this is C. And the stiffness is given. Stiffness here it is 3K, here it is 2K, here it is K. Here it is K, and somewhere here we have a load of P and the distance is L by 2, L by 2. Now find out the forces in your spring A, find the force in spring B, find the force in spring C. I have just now explained you, please. मैंने आपको अभी पढ़ाया था, चलो do it fast. If you want I'll give you the length भी आपको मैं दे दूंगा, 1 second. तो ये यहां से लेके आपके पहला तक आपको A, यहां से लेके यहां तक आपको B, यहां से लेके यहां तक आपका C, सॉरी ये 2A 3A, A 2A 3A लिखूं क्या यहाँ पे, मैं आपको बताऊं क्या, फ्रॉम C वी हैव A, फ्रॉम B वी हैव 2A, फ्रॉम A वी हैव 3A, A 2A एंड 3A, 3 अलग लेंथ है हमारे, फ्रॉम C इट इज A, फ्रॉम B इट इज 2A, फ्रॉम A इट इज 3A. Now calculate the force in all the 3 spring system. A में A के स्प्रिंग में कितना आपको फोर्स है, B केस में कितना आपको फोर्स है, और C केस में आपको कितना फोर्स है. So I'll even give you the options. First one is 1:4:9. Second one is 9:4:1. Third one is 1:1:1. Fourth one is none. चलो चलो जल्दी जल्दी, मेरे इसमें आज भी चार्जिंग 14 मैंने चार्जिंग लगाया था, इट वाज 90%, बट पहले ही लेक्चर में वो डायरेक्टली इट केम टू 30%. So should we solve or you will solve? So here also, as I said you, again go with the same old concept. Here we have theta. So first one, second one, third one. So this is my delta at A, you can take delta at B, you can take delta at C. So from here it is A, it is 2A, it is 3A. It is visible, शायद विजिबल है,
Yes, sir. ओके, तो सेम जैसा मैंने आपको पढ़ाया था वैसा ही आपको करना है, देयर इज नो चेंज। यस, देखिए आप, वी हैव ए, वी हैव 2a, वी हैव 3a, तो कैसा कर सकते हैं हम? सेम 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 कॉन्सेप्ट, डोंट वरी, वो स्प्रिंग रहने दो या वो केबल रहने दो, जितना आप लोड लगाओगे ना तो उतना तो लेगा ही ना उसके रिवर्स में। तो कैन आई राइट फ्रॉम द सिमिलर ट्राइंगल, कैन आई राइट डेल्टा सी बाई ए which is equal to delta b by 2a which is equal to delta a by 3a. From similar triangle can I write this? Yes, from similar triangle can I write this? Yes, sir. हाँ, यहां पे आप देखिए, एक आपको याद रखना है, केबल और स्प्रिंग में, केबल का मतलब है कि एक वायर है ना, केबल का मतलब है एक वायर। स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा मतलब, आप देख सकते हो, आप जब फोर्स देते हो ना तो ऐसा दबा सकते हो एंड द फोर्स कैन कम बैक, स्ट्रेन एनर्जी, है ना। तो ये स्प्रिंग में इसलिए हमारे पास स्टिफनेस रहता है 3k एंड 2k, इसलिए ये प्रॉब्लम में आपको स्टिफनेस दिया था, स्टिफनेस आपको दिया था, बट पहले के प्रॉब्लम में आपको स्टिफनेस नहीं दिया था। तो सिर्फ आपको एक ही याद रखना है, डेल्टा वैल्यू which is for springs if you take you can write as force upon its stiffness, ये आपको एक याद रखना है, क्या है, डेल्टा इज इक्वल टू एफ बाई के, डेल्टा इज इक्वल टू एफ विच इज फोर्स बाई यर के। तो हमारे को फोर्स ही फाइंड आउट करना है ना, इसीलिए तो वो फोर्स पूछा है क्वेश्चन में, आपको फोर्स, क्वेश्चन में फोर्स पूछा है इन अ स्प्रिंग एंड उसने स्टिफनेस दिया है आपको, के का वैल्यू दिया है ना 3k 2k एंड k। तो यहाँ पे इन प्लेस ऑफ डेल्टा कैन आई टेस्ट f by k? Yes or no? What is delta? Delta is this like deformation. Deformation in a spring is equal to stiffness से उसको आपको मल्टीप्लाई करना ही है। अगर वो आपको फोर्स पूछ रहा है, देखो आप, see here, he is asking us force. Yes or no? Delta already we know. So can I write this as F at A? Sorry, F at C. C था F at C by A into ये K नीचे आ जाएगा ना, तो सीकन क्या था, सीकन K का वैल्यू K ही था, यस और नो, K का वैल्यू K ही था, यस K ही था, शुड बी इक्वल टू, नाउ डेल्टा एट B, सो कैन आई राइट एज F एट B बाय K का वैल्यू B कन क्या था बेटा, 2K था, 2K था। बहुत से बच्चे क्या करते, मतलब यहां तक ही है समझते सॉल्यूशन, they think that the solution exists till here only and the answer they write as 1:2:3। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो अगर आपको मैं देता था ना 3:2:1, तो बहुत से लोग यही टिक करते थे, क्यों, मतलब A का 3 है, B का 2 है, C का 1 है, तो ये टिक करते थे, वो गलत जाता था आंसर, फाइन। बट ही इज आस्किंग टू फाइंड आउट फोर्सेस, सो सेकंड फोर्स अगर आप देखोगे तो FB बाय 2A इंटू K का वैल्यू कितना है 2K is equal to delta at A. Delta at A is again F at A by 3A into what is stiffness at A? It is 3K. Then if you see K कॉमन है, K कॉमन है, K कॉमन है, चले जाएगा, A भी कॉमन है हमारा, A भी चले जाएगा, तो what are we remaining with? FC by what is the answer here, 1 is equal to FB by 2 into 2 is 4 is equal to FA by 3 into 3 is 9. So if you see here, now what is the answer we have? FA is to FB is to FC, which is equal to 9 is to 4 is to 1. So this is my answer. So here you can see the second option is correct. So the second option is correct. समझ में आया? स्प्रिंग का प्रॉब्लम समझ में आया? Yes, sir. Yes. Chalo, I think today I'll stop it here. Why? Because today I have given you like I think 4 to 5 problems today we have explained. And in the next class, when you are joining, please I request the students to one go with the previous lectures which I have explained you with the strain energies or something. Why? Because in the next classes again we are going to talk about strain energies, and then we are going to solve few of the problems on that. So this was about here deformations. तो ये आपका deformation का part यहाँ तक complete हो जाता है. If you have any doubts now, I think you can ask me. If you have like any of the students, if you have doubt, you can ask. किसी को कुछ डाउट?